Good morning, dear students. I welcome you all in computer class. So, I'm your computer teacher here, and we are going to learn chapter number first. But before starting chapter number 1, let me tell you one thing, that the name of the book is Let's Click. That is the name of your book, and the name of the publication is Friends Publication. So, those who are not having the book, please arrange it from the market. Right? Let's Click is the name of the book and Friends Publication is there. Now, starting with the first chapter here, this is your advanced features of Windows 7. In this chapter, we are going to learn about different topics given here, like introduction of Windows 7, then libraries, what are libraries in Windows 7, then changing the views of files and folders, how to organize the different files and folders, and how we can create the shortcut on desktop, then how to group files and folders on a screen keyboard, that is not explained in the chapter. Next one is CD burning. So all these topics we are going to cover in this first chapter. So starting with the first one topic here, introduction. So we will learn about what is Windows Explorer. Windows Explorer is actually a program used across the world. It is a unique program that helps to organize and view files and folders that are stored in various disk drives of a computer system. That means, as you know, that computer system is used for the different purpose. Like we can create any document file also, we can create any Excel file also, we can create any PowerPoint presentation, like different works we can do. So for that purpose, we organize the different applications into the different disk drives, right? So to organize the different files and folders according to their task or according to their work, according to their functionality, we organize it into the different files and folders, and that is the job of Windows Explorer. Next thing is how to open the Windows Explorer. So first step is click on Start button. Now where is the Start button? Look at here. This is your step number 1. Start button. See this one. This is known as your Start button. After that, click on All Programs. As soon as you click on the Start button, you can see the option here, All Programs. This is your step number 2. Third step is click on Accessories. So when you click on All Programs, you can see here on the top, you will get the option Accessories. This. Right? From there, you can click on Windows Explorer. Step number 4. This one. Fine. When you will click on Windows Explorer, a new window will appear in front of you, that is this. Now this is known as your Windows Explorer. Now this is divided into two parts. This window is divided into two parts. This is known as your left pane and this one is known as your right pane. That means this complete box left pane, this box right pane. Okay, left part, right part. And on the top you can see here, this one is your menu bar. Which one? This, which displays all the menus on the top of the screen. So this is known as your menu bar. Fine. Now left pane, that is also known as given here navigation pane. Navigation pane, why we are saying it? Because we can navigate. Navigate means to move. Navigate means to move. Right? That means हम एक एप्लीकेशन से या हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन से वी कैन मूव टू द अनदर लोकेशन विद द हेल्प ऑफ दिस नेविगेशन पेन. नेक्स्ट हेयर कम्स राइट पेन. यहाँ पे देखिए राइट पेन में क्या लिखा हुआ है? वी आर हैविंग डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर्स एंड लाइब्रेरी. दिस इज इन योर राइट पेन. फाइन. नाउ कम टू हेयर libraries in Windows 7. Here picture is not that much clear, so you can open your book and at the same time you can see there, check out in your book what are the options given there in this diagram. So what is library? Library are user defined collection of content. It is a type of folder in Windows 7 that is used to manage music, pictures, documents, etc.
A library brings together the similar category files together. That is the important line. Means what is the use of library? Library is a location which is mainly used to organize the user content. मतलब जो user files create करता है उसको organize करने के लिए we use the concept of library. अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें user create कर सकता है कंप्यूटर में? Music, right? Pictures, that means images, है ना? Then videos, user can create documents. So user can create multiple things, huh? So to organize all those content we use the concept of libraries. So libraries brings together the similar category files together. That means अगर music audio file होंगी तो वो सब किस में जाएंगी? Music में. अगर pictures हैं that means अगर आपके पास image file है ना, pics हैं किसी चीज़ के, तो that will कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पिक्चर्स. अगर वीडियो फाइल है तो वो किस में आएंगी? वीडियोस में. अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है जैसे कि MS वर्ड में या नोट पैड में, सो दैट विल कम अंडर योर डॉक्यूमेंट. इट मीन्स सिमिलर जो फाइल्स होंगी दैट विल कम टुगेदर. Next is given here, do you know, read out here, it is given, we can use the back and forward buttons located in the menu control bar of Windows Explorer to go back and forward. Means what? I can use, here it is given left arrow and right arrow. This left arrow name is given in reverse, that means names are given wrong. यहाँ पे क्या होगा, जो previous वाला होता है that means this one, this is known as your backward button, and this arrow known as forward button to move back and forth. Next is, you can see here the different types of libraries are given here. Document library, music library, documents में सारे documents आएंगे, music library में सारी audio files आएंगी. Then given here your pictures. यहाँ पे देखो folders बने हुए हैं, इस folders के अंदर भी pictures होंगी और बाकी सब यहाँ पे देखिए pics are shown here. Different pictures are there, so that comes under your pictures library. And the last one is your video, that means your video library, जहाँ पे आपकी जितने भी video file होंगी जिसमें audio video दोनों होते हैं वो किस में आएगा? Under the video library. I hope all the points are clear which I have explained now. That is a very easy thing. Coming to the next topic, changing the view of files and folders. View of files and folders means normally when we open any file or when we open any folder, then I can see that folder on the screen or that file, but I can change the view of that. View का मतलब कि हम उसको बड़ा भी डिस्प्ले कर सकते हैं, मतलब उसका जो साइज है, we can change the size of that particular file or folder on the screen. तो how I can change the view of it, हम उसको जो दिख रहा है वो फाइल और फोल्डर उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? So given here, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर this type of icon, हाँ, this type of icon will be shown to you on the screen. When you will click on this icon, you can see number of options in front of you, that is extra large icon, medium icon, small icon, list icon, details icon, and then tiles and content. All these are the options here, and one by one we will study all these. Coming to the next, extra large icon. Now extra large icon, this option is used to display files and folders as extra large icon. Means अगर आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो आपके जो फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उनका साइज़ बहुत बड़ा होगा. दैट मीन्स यू कैन सी हियर दिस मच बिग files and folder size. When you will click on large icon, so this option is used to display files and folders as large icon. Means somehow just little bit difference will be there, कुछ थोड़ा small होगा size में as compared to extra large icon. मतलब एक folder अगर इतना बड़ा है extra large icon में तो उससे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा in your large icon. That means this much size. Same for the medium icon also. If you will click on medium icon, तो icon का जो size होगा that will be this much, right? Next is small icon. Same with this. Small icon का size जो होगा वो इतना होगा files and folders में. Next is list icon. List icon जो होगा, this option is used to display small icons followed by the list of files and folders. मीन्स वॉट, यानी कि एक लिस्ट की फॉर्म में. लिस्ट की फॉर्म में मतलब फर्स्ट आइटम, सेकेंड आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम, लाइक दिस. मीन्स फर्स्ट फाइल नेम और फोल्डर, सेकेंड फाइल नेम फोल्डर और थर्ड फाइल नेम, फोर्थ फाइल नेम इन अ सीरियल ऑर्डर वन बाय वन. दिस इज योर लिस्ट आइकन.
Next here comes your details. In detail icon, this option is used to list files and folders. That means एक proper list display होती है. That means first, second, third, fourth, fifth, sixth in a serial order. ठीक है, including उसके साथ क्या क्या चीज़ें display होती है, including facts about the files. For example, यानी कि किस फाइल का नेम क्या है, किस टाइप की फ़ाइल है, मतलब डॉक्यूमेंट फाइल है, वर्ड फाइल है, पावर पॉइंट वाली फ़ाइल है, विच टाइप ऑफ फाइल इट इज़, कितना साइज़ ले रही है, 1 KB, 2 KB, 1 MB, 20 MB, हाउ मच साइज इज़ देयर, एंड डेट मॉडिफाइड, और किस टाइम पे लास्ट आपने उसको मॉडिफाई किया है, मतलब उसमें आपने लास्ट कब चेंजेस किए हैं उस फाइल में. तो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन विल डिस्प्ले अलॉन्ग विद द नेम ऑफ पर्टिकुलर फाइल विच यू हैव क्रिएटेड. दिस इज़ योर डिटेल्स आइकन. नेक्स्ट, टाइल्स आइकन. टाइल्स आइकन क्या होगा? दिस ऑप्शन इज यूज टू डिस्प्ले फाइल्स एंड फोल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स. दीज आइकन्स आर लार्जर एज कम्पेयर टू लिस्ट व्यू एंड डिटेल्स व्यू. देखो, इन्फॉर्मेशन तो टाइल्स में भी डिस्प्ले होती है, बट द थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर लिस्ट व्यू और डिटेल्स व्यू का जो साइज़ होता है, हर फोल्डर का जो साइज़ होता है उससे कुछ बड़ा होता है किसमें? टाइल्स में. दिस इज़ द ओनली डिफरेंस. फाइन. देन नेक्स्ट थिंग इज़ कंटेंट. कंटेंट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू योर डिटेल्स. वहाँ पे भी क्या हो रहा था कि आपकी फ़ाइल का नेम क्या है, उसका टाइप क्या है, उसका साइज़ क्या है, कब आपने मॉडिफाई किया है, कब आपने उसको क्रिएट किया है, ऑल दोज इन्फॉर्मेशन विल बी देयर. बट द डिफरेंस इज डिटेल्स क्या करता है, सीक्वेंस में वन आफ्टर द अनदर डिस्प्ले करेगा विदाउट एनी गैप इन बिटवीन. बट कंटेंट जो करता है वो फाइल्स और फोल्डर्स को सीक्वेंस में तो डिस्प्ले कर रहा है इस तरीके से, बट देयर इज़ द गैप इन बिटवीन टू फोल्डर्स. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिटेल्स एंड कंटेंट. So here we have covered the topic how to change the views of files and folders. Now coming to next, how to organize files and folders in Windows Explorer. Means first thing is, अब organize में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. Now the very first topic under organizing is your opening the files and folders. Means how we can open a file. You all know it very well how to open a file. If you want to open it directly, you can double click. When you will double click any file or folder, it will get open. But with the help of options, if you want to, then the steps are, firstly select the folder which you want to open. तो मुझे कोई folder open करना है तो I will click on this folder. ठीक है, and then on the top here in your book you can see there is the option click on open option. क्या कौन सा ऑप्शन मिलेगा? ओपन. सो व्हेन यू विल क्लिक ऑन ओपन ऑप्शंस, तो ये जो पर्टिकुलर फोल्डर होगा दैट विल गेट ओपन. जैसे आपने क्लिक किया तो आप देखो आपके पास एक और नई विंडो आ जाएगी और उसके अंदर जो भी पर्टिकुलर फोल्डर्स होंगे दैट विल गेट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. क्लियर? नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर. किसी नया फोल्डर अगर आपको क्रिएट करना है तो कैसे कर सकते हैं? दो ऑप्शन है. एक डायरेक्ट मेथड होता है राइट क्लिक विद द माउस, और एक होता है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग सम स्टेप्स. सो फर्स्ट थिंग इज स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट द फोल्डर फ्रॉम द लेफ्ट पेन. मीन्स आपको कहाँ पे क्रिएट करना है अपना फोल्डर, उस पर्टिकुलर लोकेशन को या उस पर्टिकुलर फोल्डर को यू हैव टू ओपन इट. सो स्टेप नंबर 1 इज सेलेक्ट द फोल्डर इन विच यू वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर. स्टेप नंबर 2, क्लिक ऑन न्यू फोल्डर ऑप्शन फ्रॉम मेन्यू कंट्रोल बार. कहाँ पे? मेन्यू कंट्रोल कहाँ होती है? सबसे ऊपर. ठीक है, मेन्यू कंट्रोल में हेयर यू विल गेट द ऑप्शन न्यू फोल्डर. क्लिक ऑन दिस एंड जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ देखिए आपके पास एक इस तरीके से फोल्डर बना हुआ आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद टाइप द डिज़ायर्ड नेम फॉर द फोल्डर व्हेन न्यू फोल्डर आइकन अपीयर्स ऑन द राइट पेन. तो राइट पेन में जैसे आपके पास ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे जो ब्लू कलर का आपको विजिबल हो रहा है, आई होप, यहाँ पे देखो स्टेप नंबर 3, दिस वन. नाउ राइट द नेम हेयर, राइट द नेम ऑफ द न्यू फोल्डर विच यू हैव क्रिएटेड. सो दिस इज हाउ यू विल क्रिएट द न्यू फोल्डर. नेक्स्ट, हाउ टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर. If you want to rename something, so firstly you have to select that file or folder which you want to rename. जिसको rename करना है पहले उसको select करोगे. select करने के बाद rename option आपको मिलेगा organize menu में. कहाँ पर? organize menu में आपको मिलेगा rename option. You can see here with the help of diagram. यहाँ देखिए, this is your organize menu. organize menu में you will get the option here rename. You can look it in your book, it is not that much clear. ठीक है,
So rename option, when you will click on this, so step number 3, now type the required new name, whatever is required. So here rename is done. Next, how to select all files and folders. अगेन द सेम थिंग, सिलेक्ट द लोकेशन, जहाँ पे आपको उसको सिलेक्ट करना है, सारे फोल्डर्स को, उस पर्टिकुलर फोल्डर को ओपन करोगे और उसके बाद में ऑर्गेनाइज मेन्यू में जाके ऑप्शन मिलेगा आपको सिलेक्ट ऑल। ऑर्गेनाइज मेन्यू में सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल से क्या होगा, आपके पास अगर ये 4 फोल्डर्स हैं तो ऑल दीज 4 फोल्डर्स विल गेट सिलेक्टेड, राइट। बट if you do not want to select all the folders, suppose we are having 4 folders but I want to leave any one, ठीक है, I want to select only 3 folders, so उस केस में हम क्या कर सकते हैं, we can hold down control key and click on the desired files to select non-adjacent files or folders randomly. means what, अगर हमें suppose इस folder को select नहीं करना है, so what I will do is I will not click on select all option, I will press down the control key, कंट्रोल की को प्रेस करके रखोगे एंड देन विद द हेल्प ऑफ माउस आई विल क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर फोल्डर, ऑन दिस एंड ऑन दिस, सो दीज फोल्डर्स विल गेट सिलेक्टेड। यानी कि कंट्रोल की इज मेनली यूज्ड टू सिलेक्ट नॉन एडजेसेंट, नॉन एडजेसेंट मतलब जो लगातार नहीं होते, ठीक है। नॉन एडजेसेंट फाइल फोल्डर्स को सिलेक्ट करना है तो किसकी हेल्प से करते हैं, कंट्रोल की हेल्प से। दैट इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। CTRL स्टैंड्स फॉर कंट्रोल। Next, how to delete files and folders. Same here, select the file or folder which you want to delete. Fine. Next, click on the delete option from organize menu. Organize menu में जाके delete option को select करोगे and then confirmation message will come, are you sure you want to delete it? So you will click on yes, that definitely, that means permanently I want to delete this, so click on yes option to delete that particular selected folder. This is how deletion operation will performed. Next is moving. How to move file and folder. Now suppose we are having a folder, ठीक है, in C drive. I want to move it to D drive, ठीक है। तो एक फोल्डर C ड्राइव में है जिसको D ड्राइव में हमें क्या करना है, मूव करना है। सो इन दैट केस जब हम मूव करेंगे तो जो फोल्डर हमारा सपोज F नेम से है, दैट विल गेट डिलीटेड फ्रॉम हेयर एंड विल शिफ्ट टू D ड्राइव। मूविंग का मतलब होता है दैट मीन्स इट विल शिफ्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, इट डजेंट मीन दैट अ डुप्लीकेट कॉपी विल गेट क्रिएटेड। इसका मतलब ये होता है कि वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा अपनी ओरिजिनल लोकेशन से टू द न्यू लोकेशन। नाउ इफ आई वॉन्ट टू परफॉर्म सच टाइप ऑफ ऑपरेशन, सो आई विल फॉलो दीज स्टेप्स 1 2 3 4। नाउ फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट द डिजायर्ड फाइल और फोल्डर, जिसको आपको मूव करना है उसको सिलेक्ट करोगे सबसे पहले। उसके बाद स्टेप नंबर 2, क्लिक ऑन कट ऑप्शन फ्रॉम ऑर्गेनाइज मेन्यू। यहाँ पे डायग्राम में देखो स्टेप नंबर 2, ऑर्गेनाइज में से कट ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, कट किया। कट करने के बाद में स्टेप नंबर 3 क्या है, सिलेक्ट द डिजायर्ड लोकेशन वेयर द फाइल एंड फोल्डर इज टू बी मूव्ड। कहाँ पे मूव करना है, उस पर्टिकुलर लोकेशन को ओपन करोगे। एंड स्टेप नंबर 4, क्लिक ऑन पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम ऑर्गेनाइज मेन्यू। तो जहाँ पे जाके करना है वहाँ पे आप क्या करोगे, यू विल सिलेक्ट पेस्ट ऑप्शन। सो पेस्ट ऑप्शन से क्या होगा, दैट पर्टिकुलर फोल्डर विल गेट डिलीटेड फ्रॉम द प्रीवियस लोकेशन एंड विल गेट क्रिएटेड एट द न्यू लोकेशन। दिस इज हाउ यू विल परफॉर्म मूविंग ऑपरेशन। देन नेक्स्ट इज कॉपिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। Now copying means what, if we are having a folder in C drive by the name F suppose. Now I want to shift this particular folder F into D drive here. So copy means what, that this folder F will be retained, यानी कि retain का मतलब कि वो particular अपनी previous location पे भी रहेगा folder F and it will get created at the new location also. मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये यहाँ से delete हो जाएगा, it will retain here also and here also. This is the difference between moving and copying. Moving में delete हो जाता है, copy में delete नहीं होता, a duplicate copy will get created. All the steps are same, just one difference is there. In place of cut, you will select copy option from the organize menu. कट ना करके क्या करोगे, कॉपी। बाकी ऑल द स्टेप्स आर सेम, राइट। नेक्स्ट, हाउ टू व्यू properties of files and folders. Now properties means what,
प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है किसी भी फोल्डर की प्रॉपर्टी देखने का मतलब है कि आपने उस पर्टिकुलर फाइल, वो फाइल किस टाइप की है, वर्ड फाइल है, पावर पॉइंट फाइल है, नोटपैड फाइल है, किस तरीके की फ़ाइल है, ठीक है, उसका नेम क्या है, कितना साइज़ वो ले रहा है मेमोरी के अंदर, कौन सी ड्राइव पे सेव है, सी ड्राइव पे, डी ड्राइव पे, ई ड्राइव पे, टाइम क्या था, एट व्हाट टाइम यू हैव क्रिएटेड दैट, लास्ट मॉडिफाइड डेट, type of file, all these informations will comes under your properties option. तो अगर मुझे किसी फोल्डर की प्रॉपर्टी देखनी है तो फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्ट अ फाइल और फोल्डर, जिसकी प्रॉपर्टी आपको देखनी है उसको सिलेक्ट करोगे पहले एंड देन क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन इन द ऑर्गेनाइज मेन्यू। तो ऑर्गेनाइज मेन्यू में प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन आपको मिलेगा। जैसे ही आप प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन पे क्लिक करोगे यू कैन सी हियर द डायलॉग बॉक्स ऑफ प्रॉपर्टी and here all the information related to that file will get displayed. Clear? Next, how to create shortcut on desktop. shortcut कैसे create करते हैं desktop पे? First is select a file or folder for which you want to create a shortcut. फर्स्ट थिंग इज़ वाई वी आर क्रिएटिंग शॉर्टकट। बनाते क्यों हैं शॉर्टकट को? शॉर्टकट इसलिए बनाते हैं सो दैट आई कैन एक्सेस इट वेरी क्विकली। इफ समथिंग इज स्टोर्ड इन फोल्डर्स और सब फोल्डर्स एंड आई वांट टू एक्सेस इट वेरी क्विकली, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन क्रिएट द शॉर्टकट ऑफ इट ऑन डेस्कटॉप so that as soon as I will open my computer system, so I can see that particular icon on the desktop. जैसे ही मुझे डेस्कटॉप पे वो आइकन मिलेगा I will click on it and then I can access it. So for that purpose we use shortcut, right? Next, so firstly select a file or folder for which you want to create shortcut. Second step, right click on the file or folder and click send to option. तो स्टेप नंबर 2 देखो, जैसे इस फोल्डर को जहाँ जिसका आपको शॉर्टकट क्रिएट करना है आपको एक ऑप्शन मिलेगा राइट क्लिक करके सेंड टू पे जैसे आप क्लिक करोगे थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा सिलेक्ट द डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट, यानी कि मुझे डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्रिएट करना है। तो जैसे आप स्टेप नंबर 3 परफॉर्म करोगे तो आपको जो शॉर्टकट होगा वो आपका क्रिएट हो जाएगा कहाँ पे? डेस्कटॉप पे। तो अब आपको पर्टिकुलर सब फोल्डर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या कर सकते हो सीधा डेस्कटॉप से यू कैन एक्सेस इट। नेक्स्ट इज योर CD burning. Now what is CD burning? CD burning is the process of copying the files to CD of DVD. Now suppose I have something in my laptop, I have some video or I have some pictures in my laptop. Now I want to transfer it to CD or DVD. So what I will do, I need something to copy the data from my laptop to the CD or DVD, ठीक है? But the process of transferring the data from my computer, from my laptop, from any of my electronic device to the CD or DVD, that complete process is known as CD burning, right? Now you can see here, this shows you the process of CD burning. This is your CD, ये दिया हुआ है यहाँ पे देखो, दिस इज़ योर CD here, ठीक है ना? अगर मुझे कुछ भी डेटा कॉपी करना है तो आई विल इंसर्ट दैट CD ड्राइव में इंसर्ट कर दोगे। इंसर्ट करने के बाद में हम जो भी CD बर्निंग का प्रोसेस है उसको कैरी करेंगे, ठीक है ना? वी रिक्वायर दीज टू बर्न अ CD। क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है CD बर्न करने के लिए? अ रिकॉर्डेबल CD ड्राइव और DVD ड्राइव, मतलब एक तो हमें CD या DVD चाहिए होती है जिस पे हमें डेटा राइट करना है। सेकेंड इज राइटेबल CD रोम, ठीक है? एंड द थर्ड वन इज CD burning सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स वी रिक्वायर फॉर CD burning. Next is how do we burn a CD? That means steps to burn a CD. So first step is insert CD in CD-ROM drive. मतलब ये है हमारी CD-ROM ड्राइव, पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर हम उस CD को क्या करेंगे? इंसर्ट कर देंगे पहले, ठीक है? ये हमारी क्या है? CD, दिस वन सिल्वर कलर, दिस इज़ माई CD और जिसमें हम इंसर्ट कर रहे हैं दैट इज़ माई CD-ROM ड्राइव। उसके बाद जब हम इंसर्ट कर देंगे अब हम क्या करेंगे? CD बर्निंग सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, ठीक है? हमने CD बर्निंग सॉफ्टवेयर जो हमारे लैपटॉप में ऑलरेडी स्टोर्ड है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, उसको ओपन करोगे। जैसे ही आपने ओपन किया तो वहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा डेटा CD ऑप्शन, रिटन हेयर इन योर बुक यू कैन सी डेटा CD है या DVD है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करोगे। नाउ क्लिक ऑन दिस डेटा CD ऑप्शन। नाउ स्टेप नंबर 3 इज क्लिक ऑन ऐड बटन, यहाँ पर दिस यू कैन सी ऐड बटन।
ऐड बटन हम क्या करेंगे, ऐड बटन से हम जो भी चीज़ हमें क्या करना है, ऐड करना है, मतलब बर्न करना है अपनी CD पे, उस पर्टिकुलर डेटा को हम ब्राउज़ करेंगे और ऐड कर देंगे अपनी CD पे, ठीक। देन स्टेप नंबर 4 इज़ क्लिक ऑन नेक्स्ट ऑप्शन टू राइट द रिलेटेड फाइल्स। अगर मुझे कुछ और ऐड करना है तो हम उस पर्टिकुलर नेक्स्ट पे क्लिक करके हम उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन बर्न ऑप्शन, स्टेप नंबर 5, यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर 5, हियर इज़ योर बर्न ऑप्शन। जैसे आपने बर्न पे क्लिक किया तो स्टेप बर्न पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक न्यू विंडो डिस्प्ले होगी एंड क्लिक ऑन ओके एट द डेटा डिस्क बर्निंग डायलॉग बॉक्स एज इट अपीयर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बर्निंग प्रोसेस। तो लास्ट में आपके पास एक ऑप्शन आएगा ओके, जैसे ही आप इस ओके पे क्लिक करोगे तो वट एवर डेटा यू वॉन्ट टू बर्न, दैट डेटा विल गेट स्टोर्ड इन योर CD or DVD. Is that clear? So this is how we will burn the data. Then after this we are going to end our video here. The remaining part we will discuss along with question answers, and this one 2-3 topics are left from this chapter. All together we will discuss these things in the next video. So that's all for today. Thank you. If you are still having any problem in the explanation, you can put the comments and you can make your queries clear, right? Thank you.